बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक और टॉपिक सोर्सेस फॉर लोकेटिंग द प्रॉब्लम। ये काफी डिफिकल्टी होती है स्टूडेंट्स को व्हेन दे आर लोकेटिंग अ प्रॉब्लम एरियाज, कि कौन कौन से एरियाज होते हैं, कहाँ से आप अपने जो प्रॉब्लम है, जो आपका टॉपिक है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा इस बारे में होगा कि वो कौन से एरियाज है और क्यों जरूरी है, क्योंकि एक बिगिनर रिसर्चर जो है वो इस चीज से अवेयर नहीं होता। तो ये लेक्चर जो मेरा है वो सारा उसी के मुताबिक है कि कैसे आप लोकेट करेंगे उन सोर्सेज को जो कि फिजिबल होगा फॉर द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम और टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहले आप देखें कि है क्या, सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम क्या होते हैं। दैट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप एक सुटेबल प्रॉब्लम के लिए एक चॉइस जो आपका है, एक सुटेबल प्रॉब्लम की चॉइस जो है, दैट इज ऑलवेज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। द चॉइस ऑफ अ सुटेबल प्रॉब्लम इज ऑलवेज डिफिकल्ट, क्योंकि जब आपने एक सुटेबल प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लिया, चॉइस कर लिया, उसको चूज कर लिया, तो द 50% वर्क ऑफ योर रिसर्च थीसिस हैज बीन डन, वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक अच्छा टॉपिक जब आप सिलेक्ट करते हैं तो उसके वो तमाम पैरामीटर कि आप कहाँ पे उसको लेके जाएंगे, उसकी मेथडोलॉजी क्या होगी, उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, उसके सैंपल क्या होगा, सैंपल सिलेक्शन होगा कैसे होगा, टूल ऑफ डाटा कलेक्शन आप कैसे करेंगे, और उसके एनालिसिस कैसे करेंगे। तो ये तमाम चीजें जो आपकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, मॉडरेट वेरिएबल है, इंटरवीनिंग वेरिएबल है, वो सारे डिफाइंड हो जाते हैं जब आप एक अच्छा सुटेबल प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं। Again, few beginners possess real problem awareness, and even the more experienced researcher hesitate at this time. बहुत से बिगिनर हमारे पास आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, और दे हैव गॉट वेरी गुड सेंस, अवेयरनेस का, प्रॉब्लम अवेयरनेस की सेंस होती है। कभी कभी आप जो बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो भी हेजिटेट करते हैं इस स्टेप को लेने के लिए। लेकिन क्या होता है कि आप वर्डिंग लिख लेते हैं, उस वर्डिंग का समझ आना चाहिए कि है क्या। देखिए, आप जब भी प्रॉब्लम सिलेक्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में अपने आप को डालें। अगर आप स्पोर्ट्स मैन, अगर आप स्पोर्ट्स के एरिया को लेना चाहते हैं, तो फिर आप देखें कि आप पे क्या बीत रही है, आपकी कोचिंग के साथ क्या हुआ था, आपकी ट्रेनिंग में आपके साथ क्या हुआ था, आपकी परफॉर्मेंस कभी एक्सेलरेट करती थी, एक्सेल करती थी, कभी आप डाउन हो जाते हैं, व्हाट वर द रीजन। तो वो तमाम जो चीजें हैं, दिस कैन बी सॉल्व बाय द रिसर्च, एंड द प्रॉब्लम इज विदिन दैट वर्डिंग जो आप कर रहे हैं, जो आप सीख रहे थे, जो आपको कोचिंग दी जा रही थी, जो आपको जो साइकिल था, आपके ट्रेनिंग का साइकिल था, मीजो साइकिल था, मैक्रो था, माइक्रो था, वो तमाम जो है उसको आप मद्देनजर रखते आप टॉपिक ले सकते हैं। अगर आप एकेडमिशियन हैं और एकेडमिक साइड से आप लेना चाहते हैं, तो भी आप देखें कि आगे जाके मैं फिर वो बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसको आप लेके एक अच्छा सुटेबल प्रॉब्लम सिलेक्ट कर सकते हैं। इट इज अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कमिट वन सेल्फ to a problem that will inevitably require much time and energy, and which is so academically significant. This is really the serious responsibility of oneself. A person who is going to select the problem, he has got a serious responsibility that he required the time, energy, and the problem which is academically significant, which can contribute in the field of research, which can contribute in the field of academics, which can contribute in the field of sports, in coaching, administration, management, like this type of thing. So this is the responsibility of the researcher as well as the research supervisor. Many of the problems confronted in the classroom, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि बहुत सी चीजें आपको क्लासरूम में, स्कूल में, कम्युनिटी में जो कि इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, एंड मोर अप्रोप्रिएट फॉर द बिगिनिंग रिसर्चर। इस किस्म के जो क्लासरूम के जो एक्सपीरियंसेस है, जो स्कूल के हैं, जो कम्युनिटी की हैं, इनको इन्वेस्टिगेट करना, या बिगिनर स्पोर्ट्समैन है उसकी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, किस इवेंट में उसको जाना चाहिए,
ये तमाम वो एरियाज हैं, वो टॉपिक है जो कि एक बिगिनर रिसर्चर के लिए यहाँ पे काम करना चाहिए। अब आप हाई लेवल पे ना जाइए, जब आप बिगिनर हैं, न्यू रिसर्चर हैं, आप पीएस या अंडर ग्रेजुएट हैं, तो उसमें आप देखें कि क्लासरूम की क्या इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट ऑफ द क्लासरूम, स्कूल की लोकेशन, स्कूल में क्या क्या चीजें, उसकी फैसिलिटीज वगैरह। इसी तरीके से कम्युनिटी में आपकी पार्क है नहीं है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती है नहीं होती है, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो वहाँ पे आप एक बिगिनर रिसर्चर के लिए जरूरी है और इम्पोर्टेंट है कि वो वहां से ही ले। अगर आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग की जो इब्तिदा है, कि जब आप किसी भी इवेंट में जाते हैं तो उसकी ट्रेनिंग की इब्तिदा कैसे होगी, किस तरह आपको ट्रेन किया जाएगा, ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स क्या होंगे, आपके जो सेशन है पर डे पर वीक पर मंथ, तो वो क्या होंगे, तो वो तमाम जो चीजें हैं एक बिगिनर रिसर्चर के लिए। द प्रॉब्लम में इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजमेंट प्रोसीजर। देखिए, हर इदारे में, हर शोबे में, आप स्पोर्ट्स ले लें, आप एकेडमिक्स ले, यूनिवर्सिटीज ले लें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ले लें, बिजनेस इंस्टीट्यूशन ले लें, पॉलिटिक्स ले लें, जो भी चीजें हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें ऑर्गेनाइजेशनल और मैनेजमेंट प्रोसीजर्स होते हैं कि आप किस तरह आगे लेके जाएंगे। तो इसमें भी आपका एक टॉपिक बन सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ लर्निंग मटेरियल आर प्रेजेंटेड। Learning material are presented by the teacher. How he is going to present that learning material? So whether he is using the traditional lecture methods or he use the multimedia, the computer-based teaching, like this type of things. So these are the areas in which you can select your problem. How does one method have more effective results than another? इसमें मैं एग्जांपल दूंगा कि एक ट्रेडिशनल टीचिंग है और एक है कंप्यूटर बेस्ड या मल्टीमीडिया बेस्ड टीचिंग. सो द इफेक्टिवनेस ऑफ द बोथ teaching methods can be evaluated, and the effectiveness can be seen in this way, that how the student are more benefits from the lecture system or from the multimedia system, and how is one is more effective than another. How does teacher feel about this procedure? What is the feeling? What is the perception of the teacher regarding these material which are being used, or multimedia, or the lecture, which is more effective? What are the perception? What are the viewpoint of the teacher? That can be a research topic source. How do student and parents feel about that? So another area, if you can analyze the feeling, the perception of the student or the parents, what they feel about that methods which are being used by the teacher in the classroom. Another, what are the effects of out of school activities? Out of school activities like recreational activities, sports activities, other engagement, academically engagement, physically engagement, mentally, socially, emotionally. So, what are those effects in which out of school activities in which students are involved, that is beneficial for the student or not, that should be done or not? So, this can be one of the area of the research. How it affects student and the teaching learning process. The out of school activities, how they affect the student and the teaching learning process. So that can be the area for the research for the beginner. So there's a lot of another issues, another areas which can be suggested problem selection for the student. So the next point is the technological changes and curricular development are constantly bringing forth new problem and new approaches, opportunities for research. The advancement in technologies and curricular development are also give opportunity to the beginners that they should select research topics for themselves. For example, educational innovation in classroom organization, innovation in teaching material and procedure. Like you can say, I'm going to record my lecture and I will put it on the YouTube channel or on the WhatsApp, so the student may able to listen it,
anytime, anywhere, when they got time. So this is one of the innovation in teaching, that I'm sitting in my room, and you student are not in the proper formal classroom. So you can have this kind of opportunity. So this can be a source of the research problem. The application of technical devices and equipment. So like I said that Zoom or classmate is this type of activities, this type of material application of the techniques of the equipment can be used, and how it is effective. So the more the time you have given to the learning, that is so these are the areas which can be keep in mind when you are going to select a problem. Such innovation is teaching by television, program, instruction, modification, alphabets, new subject matter, concept and approaches, flexible scheduling, and team teaching need to be carefully evaluated through the research process. So as I earlier mentioned, that these type of activities, this type of things like teaching by television, teaching by Zoom, program instruction, modification, alphabets, new subject matters, concept and approaches, flexible scheduling and timing. Like I'm recording this lecture, and you can have your flexible schedule when you have got time. You can watch it, you can learn it from. So these can be the area where you can choose your topic of interest. Next, classroom lectures, class discussions, seminars, report, and out-of-class exchange of ideas with fellow students, and professor will suggest many stimulating problems to be solved. Reading assignments in textbooks, special assignments, research reports, and term paper will suggest additional areas of needed research. Research articles often suggest techniques and procedures to choose another problem. Many research articles suggest problems for further investigation that may prove helpful. So the classroom lecture, the discussion with the fellows, with the supervisors, the periodicals, the assignments, the textbooks, the reports, the thesis, the synopsis, the abstract. So these all are those areas from where you can have the idea to selection of the problem. One, the last thing was that few, but majority of the article, majority of the thesis, MPhil level or PhD level, they have another one portion which suggests further investigation. The researcher says that I have left these things so the future researcher can have these ideas and go for the research. So वो आपको बताता है कि किस किस्म की आप एरियाज, ये एरिया मुझसे रह गए हैं, आप जाके इस एरिया पे काम कर सकते हैं, या ये वेरिएबल से छूट गया है तो ये वेरिएबल डाल के आप फर्दर रिसर्च को दे सकते हैं. तो इसलिए हमेशा stress upon that literature review when you are coming for the research thesis. So you may have a lot of literature study. Literature study is a very beneficial, very important in locating of the problem, in selecting the problem, and widen your horizon. Your thinking can be, your wisdom can be more effective, more vast as you were have before. So I suggest to all the students that literature review must be done and must carefully be seen that the area which you have chosen for your research topic, so the related articles, the related thesis, the related abstract should be read carefully
and the literature review help you a lot in selecting, in organizing, evaluating your work. So the literature review must be done carefully and extensively. Such specialized sources as the Encyclopedia of Educational Research, Dissertation Aspect International, the Handbook of Research and Teaching, and similar publication are rich source of problem seekers. Consultation with the advisor or professor is, although the student should not expect research problem to be a sign. Consultation with more experienced faculty member is a desirable practice. ऊपर मैंने कुछ चीजें बताई, एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल, हैंडबुक ऑफ द रिसर्च, डिसर्टेशन इंटरनेशनल, एजुकेशनल, तो ये तमाम वो जो पबमेड है, ये तमाम वो ऐसे सोर्सेज हैं जिससे आप टॉपिक ले सकते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल और रिसर्च थीसिस वहाँ पड़े हुए हैं, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं. एंड कंसल्टेशन विद द एडवाइजर और सुपरवाइजर इज आल्सो हेल्पफुल. एंड ये मत सोचें, don't think that the supervisor will assign me a topic. A lot of students are in a state that the advisor will choose a topic for us. No, you should have the discussion. You should have the proper reading of the assignments of the research, and you should come with the mind that I will do research on that, and you should have known little bit about the history, the background of that problem, and discuss with the supervisor. Yes, supervisor आखिर में आपको वो टॉपिक रिफाइन करके देगा. He can refine your topic, but the ideas should come from your side, not from the supervisor. Most students feel insecure as they approach the choice of the research problem. They wonder if the problem they may have in the mind is significant enough, feasible, and reasonably free of unknown hazards. To expect the beginner to arrive at the advisor office with the completely acceptable problem is quite unrealistic. One of the most important functions of the research advisor is to help the student clarify his thinking, achieve a sense of focus, and develop a meaningful, manageable problem from one that may value and too complex. लेकिन स्टूडेंट कभी भी ये, बहुत से स्टूडेंट ये हेजिटेट करते, इनसिक्योर फील करते कि आया मैं जब सुपरवाइजर के पास ये टॉपिक लेके जाऊंगा तो ये टॉपिक जो है वो सही होगा, इंपॉर्टेंट होगा, फिजिबल होगा, या वो बगैर खामियों के होगा. सो डोंट थिंक दैट, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक बिगिनर जो है वो एडवाइजर के ऑफिस में आए और एडवाइजर ये उससे एक्सपेक्ट करे कि वो एक फिजिबल टॉपिक लाएगा जिसमें कोई खामी नहीं होगी और उसमें बहुत अच्छा काम होगा. ये बहुत मुश्किल होंगे, बार बार उसमें चेंज आएगा, लेकिन द आइडिया शुड बी सॉलिड. जो आपका आइडिया है, जिस पे आप काम करना चाहते हैं, जिसका बैकग्राउंड आपको पता हो, वो एक सॉलिड चीज होती है कि आपने करना क्या है. अदर थिंग्स लेफ्ट ऑन द एडवाइजर, कि अगर एडवाइजर उसमें से कोई चेंजेस देना चाहता है, एरियाज ऑफ स्टडी जो है आपकी वो जो है बाउंड्रीज ऑफ द स्टडी उसको स्क्वीज करना चाहता है, उसको एक्सपेंड करना चाहता है, पॉपुलेशन को उसके सैंपल को कितना लेना चाह रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन डिटरमिनेट होनी चाहिए. टूल ऑफ डाटा कलेक्शन जो आप सजेस्ट कर रहे हैं वो हो सकता है उसको चेंज कर ले, तो वो इंटरव्यू में चेंज कर ले, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू में चेंज कर ले, या क्लोज फॉर्म क्वेश्चनियर में कर ले, तो वो फिर एडवाइजर उन तब को देखता है और वो आपके लिए सजेस्ट करता है. कभी भी ये ना सोचे कि, और ना एडवाइजर ये सोचे कि मेरे पास एक बिगिनर स्टूडेंट आएगा और वो कंप्लीट मेरे लिए एक बेहतरीन टॉपिक सेलेक्ट करके आ जाएगा. नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट शुड नॉट बी डन लाइक दिस वे. सम सजेस्टेड प्रॉब्लम एरियाज, ये वो सजेशन है, इससे भी आगे भी जा सकते हैं. तो इसको आप जरा देखेंगे 16 के 18 में ये एरियाज लिखी हैं, जिसमें एवल्यूशन ऑफ लर्निंग रिपोर्टिंग टू पेरेंट्स, के आपकी जो लर्निंग की एवल्यूशन है, स्टूडेंट की लर्निंग की एवल्यूशन, और वो फिर इसको रिपोर्ट करे पेरेंट्स को.
student regulation control, evaluation of learning practices, philosophies, field trips, school building and facilities, lighting, safety, extracurricular programs, student after-school activities, employment, recreation, culture activity, reading, television viewing, teacher after-school activities, employment, political activity, recreation, the open classroom, audiovisual programs, health services, teacher morale, frustration and satisfaction, educational organization, local, state and national, pre-service education of teacher, student teaching, in-service program, religious and educational release time programs, dismiss time, share time, community pressure on the school academic freedom, controversial issues, or legal liabilities of teachers, co-education, special physical education, speech therapy, clinical services, social services, Paralympics, problem in higher education, selection, prediction, and success, graduate programs, comparison of the effectiveness of two teaching methods, procedures, self-image analysis, self-rating, history of an institution, program, or organization, factors associated with selection of the teaching in physical education, case studies, etc. etc. तो तमाम एरियाज हैं, छोटे छोटे एरियाज देखें कि जैसे आप केस स्टडी किसी का भी एक केस ले लें, उस पर स्टडी कर लें, फैक्टर एसोसिएटेड विद द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग इन फिजिकल एजुकेशन, के जो फिजिकल एजुकेशन में जो टीचिंग हो रही है के साथ कौन से फैक्टर एसोसिएटेड हैं, क्या वो अच्छे हैं, क्या वो बुरे हैं, इस तरह के अरेंज कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ टू टीचिंग मेथड वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। सेल्फ इमेज एनालिसिस, सेल्फ रेटिंग, सेल्फ एवोल्यूशन, कि आप बीइंग ए टीचर सेल्फ एवोल्यूशन अपने आप को करते कि मैं कितना पंक्चुअल हूँ, कितना मुझे अपने सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करता है, एंड एवोल्यूशन बाय द स्टूडेंट, एवोल्यूशन बाय द हेड्स, एवोल्यूशन ऑफ बाय द कलीग। ये तमाम एरियाज हैं जिसको आप लेके एक अच्छा टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये लेक्चर आपको बेनिफिट देगा और आइंदा के लिए आपके काम आएगा। हाफिज, थैंक यू।